So students, now we are going to see how the molecular weight of a polymer can be calculated. Now there are two methods of calculation of molecular weight. The first one is number average molecular weight and the second one is weight average molecular weight. Now proceeding further, the number average molecular weight, it is denoted as or it is represented as M, capital M, N bar. Okay, it is represented as Mn bar. It is defined as, the definition goes in this way, it is defined as the total weight of all polymer molecules in a sample divided by the total number of polymer molecules present in a sample. So how does definition goes on? अगर मुझे number average molecular weight निकालना है तो जिसमें total weight of all polymer molecules, तो हम total weight लेंगे पूरे polymer में जितने भी molecules है उसका total weight इतना है sample में divided by the total number of polymer molecules, मतलब कितने कितने monomers present है. Weight, total weight of the polymer upon number of polymer molecules in a sample, and it is denoted by Mn bar. Okay, तो अगर मेरे पास N1, N2, N3, ये क्या है? N1, N2, N3 रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. So number of molecules are N1, N2 and N3 and so on. तो उसका molecular weight हम रिप्रेजेंट करेंगे. तो N1 जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N1 मॉलिक्यूल है उसका molecular weight क्या रहेगा? Yes, M1. M1. N2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है तो उसका molecular weight क्या रहेगा? M2 and so on. तो इस तरह से N1 का M1, N2 का M2, N3 का M3 and so on. So this is how the number of molecules and the molecular weight are to be represented in a polymer sample. तो इस तरह से तो नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट इज गिवन एज फॉलोज. तो अगर N1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है और मॉलिक्यूलर वेट M1, M2, M3 है, तो व्हाट इज Mn बार नाउ? Mn बार इज, जैसे हमें क्या करना है, पहला लेना है टोटल वेट ऑफ ऑल पॉलीमर मॉलिक्यूल. तो टोटल वेट में क्या लेंगे हम? N1 into M1. So N1 M1 will give me the weight of the first molecule. तो मैंने उसका नंबर और उसका molecular weight. Same way N2 into M2, N3 into M3 plus so on upon क्या लिखा है? Total number of polymer molecules. हमारे पास कितने मोनोमर्स प्रेजेंट है तो उसके नंबर, that is N1, N2, N3 and so on. Right? तो ये जो मोनोमर्स है, इट इज 1, 2, 3 एंड सो ऑन. तो हम बार बार सो ऑन तो नहीं लिख सकते, है ना? तो हम कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं? Submission. समेशन. वेरी गुड. हाँ, समेशन रिप्रेजेंट करते हैं ना. तो हम उसको अभी Mn बार इज इक्वल टू समेशन, इट कैन बी एनी नंबर, तो समेशन ऑफ Ni monomer. So summation of Ni Mi upon summation of Ni, right? Ni Mi. अभी यहाँ पे जैसे N1 M1 था, N2 M2 था, M3 M3 था. Similarly, the last monomer जो भी होगा, तो जब तक हम उसको summation करेंगे, summation of Ni Mi upon summation of Ni. तो ये हुआ हमारा फॉर्मूला नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट का, where Mn bar is equal to summation of Ni Mi bar upon summation Ni.
So where Ni is the number of moles of ith polymer having molecular weight of Mi. तो इस तरह से Mn bar is also represented as summation of XI/Mi. Now what is Xi? Xi is the mole fraction of ith polymer having molecular weight of Mi. तो हमारा एक फॉर्मूला है Mn bar का which is summation of Ni Mi upon summation of Ni, right? तो मैं अगर इसे मोल फ्रैक्शन में लेती हूँ तो मेरा फॉर्मूला बन जाता है समेशन ऑफ xi अपॉन mi. तो ये दो चीजें आपको फॉर्मूला में याद रखनी है. तो दिस वाज अबाउट द नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट. तो नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट अगेन मैं रिपीट कर दूं, इट इज रिप्रेजेंटेड एज mn bar. In order to have the more exploration and more accuracy to find out the number average molecular weight, it can be determined by using this formula where the total weight of all polymer molecules is divided by the total number of polymer molecules. So in order to determine the total weight of all polymers, we have to consider the number of molecules having molecular weights M1, M2, M3 and so on. So if N1, N2, N3 are number of molecules and M1, M2, M3 are molecular weights uh, uh, of a polymer, then we can find out the number average molecular weight by using the formula Mn bar is equal to N1 M1 plus M2 M2 plus N3 M3 and so on upon N1 plus N2 plus L3. So in order to find out the polymer chain, we have to do the summation. So our formula becomes Mn bar is equal to summation of Ni Mi upon summation of Ni. Okay. So I think so I have repeated also the formula, that is summation of Ni Mi upon summation of Ni. Now let's start doing some numericals based on this so you will understand this concept in a more better way. Yes, all of you, please write down this question. Please write down this question. These are the numericals in order to find out the number average molecular weight of the polymer. Yes, students, have you written the question? Students, लिखा क्या? यस मैम. हाँ जी, तो बोलिए कैसे अभी आगे बढ़ना है? कैसे लिखोगे? Ni into Mi. हाँ, आपको फॉर्मूला पता है समेशन ऑफ Ni Mi अपन समेशन ऑफ Ni. यस तो मैम. क्या करेंगे नेक्स्ट? यहाँ पे ही आगे कॉलम क्या होगा? Ni
Ni. हाँ, NiMi। तो NiMi करो। NiMi मतलब क्या? 1 into 100, 2 into 200, 3 into 400, 2 into 500, 1 into 600, बराबर। 360 हाँ चलो 366.66 एक एक बताओ ना। ये हुआ 100, ये हुआ 400 400 और 1200 1200 1200 1000 1600 1000 और 600 600। हाँ, तो आपको क्या करना है अभी फिर? आपको NiMi मिला, तो मेरा फॉर्मूला क्या है? Mn बार MI summation of NiMi upon summation of NI upon summation of Ni। ये है मेरा फॉर्मूला। तो वहाँ पे वैल्यूज डालूंगी मैं। समेशन ऑफ NiMi, अपने NiMi किया तो समेशन की वैल्यू कितनी आ रही है? 3300 3300 बराबर। तो यस देखो मैम मैंने राइट है आंसर भी राइट है बराबर, वेरी गुड। सिंपल है। तो आपने क्या किया? हमने ऐसे मल्टीप्लाई किया, 100 into 1, 200 into 2, 400 into 3, 500 into 2, 600 into 1। तो ये करने के बाद आपको जो वैल्यू मिली दैट इज 3300। दैट इज समेशन ऑफ NiMi अपॉन समेशन ऑफ Ni। तो Ni हमारा क्या है? ये Ni है। तो इसको हम टोटल करेंगे, ऐड करेंगे, तो कितने हैं हमारे पास? 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 मोनोमर्स है। नंबर ऑफ पॉलीमर कितने हैं? 9 है। तो 3300 डिवाइड बाय 9 दैट इज 366.66। ओके, so all of you have solved this? Yes, yes ma'am. Okay, now Ma'am, take down the next question। हाँ जी, मैम हाँ बोलो ना। मैम इसकी यूनिट नहीं आएगी कोई? नहीं, यहाँ पे इसका यूनिट ना स्पेसिफाइड नहीं है। ओके, ओके। नहीं, इट्स नॉट स्पेसिफाइड एनीवेयर द एग्जैक्ट यूनिट क्या होती है। तो ओनली द आंसर इज दिस। मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी इसको टाइम लगेगा, देखते हैं किसका आंसर पहला आता है। ओके, तो मैं उसको क्लास का क्लेवर स्टूडेंट समझूंगी जो पहला आंसर देगा। देखते हैं कौन किसको कैल्सी पास आता है चलाने के लिए।
I hope you are solving, right? Students, are you solving, right? Yes, ma'am. Yes. Okay.